Hello, good afternoon. Welcome to a very cold winter afternoon and a cozy one indeed when we are indoors. And in the coziness of this, today I thought that let's talk about justice judgment, let's talk about action reaction. So, जजमेंट क्या है? क्या हम खुद को जज करते हैं? क्या हम लोगों को जज करते हैं? क्या हम हमेशा जजमेंट में रहते हैं? क्या हम हमेशा इस सवाल में रहते हैं कि कोई मुझे जज कर रहा है? क्या हम हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं कि मुझे दूसरों के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को, उनके रिएक्शंस को जज करना है? एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है? Reaction is when we go into the rightness and wrongness of things, whereas action is where we are choosing from the choice of possibilities. So be in the action, guys, not in the reaction of it. क्योंकि जितना हम react करेंगे उतना हम अपना anger frustration बढ़ाएंगे, उतना हम खुद की judgment में बढ़ेंगे, उतना हम लोगों की judgment ज़्यादा करेंगे. Judgment is a place of definition. Judgment is a place of blockage. Judgment is a rigid point of view. Whereas expansiveness is where we have to choose from. Choice of possibilities is where we have to choose to expand our horizons from choosing from possibilities, possible situations. एक्शन रिएक्शन में जब भी हम रहते हैं तो हम चॉइस ऑफ पॉसिबिलिटीज और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिजिडिटी ऑफ व्यूज बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है, या हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं उसको चेंज करने की. इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू तब है जब हम खुद को जज भी नहीं कर रहे, दूसरे को भी जज नहीं कर रहे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी सिचुएशन में क्या है. कैन वी स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम there is no right and wrong. Everyone has their own sets of rights and wrongs. The day we start operating from this, the day we do not get into the good, bad, ugly of other people, of ourselves, of the situation at hand, and we just go with the flow of the energy, that इस situation में जो भी energy flow in हो रही है, जो भी यूनिवर्स मुझे मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है, इंट्यूटिवली मेरी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लाइटनेस और हैवीनेस से अगर हम फिर से ऑपरेट करते हैं तो हम एक्शन रिएक्शन में जजमेंट में नहीं फंसेंगे. जजमेंट इज अ ब्लॉकेज. Judgment is a definition that we give to ourselves, to the situation, to any person who we are discussing with, talking with, having a conversation with, having a debacle with. So we get into judgment. उसने हमारा point of view accept किया, so we have a happy judgment. उसने हमारा point of view accept नहीं किया तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ifs, buts, whys आने लग जाते हैं. हमें इसको काउंटर अटैक कैसे करना है, हमें रिएक्शन कैसे दिखाना है इमीडिएटली. नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे था, ये ऐसे नहीं ऐसे था, आपको समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ. दिस इज द मोडस ऑपरेंडी दैट वी डू नॉट हैव टू ऑपरेट फ्रॉम. दिस इज, वी हैव टू गो इनटू द लिसनिंग, वी हैव टू गो इनटू द अब्सॉर्बिंग, वी हैव टू गो इनटू द कामनेस ऑफ द सिचुएशन. कि किसी का राइट और रॉन्ग कुछ भी है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. किसी का पॉइंट ऑफ व्यू इस सिचुएशन को लेके कुछ भी है, मुझे उनको सुनना चाहिए, मुझे उनको समझना चाहिए. हो सकता है वी कैन जनरेट बेटर आइडियाज विद देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट ओनली व्हेन दे आर ऑल्सो चूजिंग एंड दे आर नॉट रिजिड. And when you are into the rightness and wrongness of their behavior, you are not flowing with the abundance of the energy. You are operating from too many barriers, too many blockages, too many ifs, buts, whys always create blockages. Too many buts because always create blockages. Too many I will try, I will find a why to everything. Finding a why to everything
is not being in the awareness of the energy that you choose to be. हर चीज का वाई ढूंढने की बजाय हर चीज में आई विल ट्राई टू डू दिस, ये मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऐसे हो गया, ये मैं नहीं कर पाई बिकॉज हाँ मैं ऐसे कर रही हूं बट ये प्रॉब्लम आएगी इसमें. So again we are choosing problems, we are inviting problems and we are being in the judgment. Judgment situation की हो specifically एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद वो खत्म हो जाती है जब वो इशू खत्म हो गया. लेकिन अगर जजमेंट लोगों की होगी, अगर जजमेंट खुद के बिहेवियर की होगी, बिलीव मी गाइस, हम खुद को कम जज करते हैं, हम दूसरों को ज्यादा जज करते हैं. हम दूसरों पे सही गलत का दायरा बहुत जल्दी सेट कर देते हैं, लेकिन खुद पे हमें वो नहीं करना है, दूसरों पे भी हमें वो नहीं करना है. हमें काइंडनेस से ऑपरेट करना है. ओके, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई हैव दिस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड डोंट इवन गो विद द बट, go with the energy flow. This is your point of view, I like it, I have mine, can you hear it? That is a better approach to go with. Interesting point of view, मैंने ऐसा नहीं सोचा जो आप सोच रहे हो. When we will start choosing no judgments, when we will start choosing no points of views about other people's behaviors, उन्होंने ऐसा क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, कैसा किया, एंड उन स्टोरीज में हम लॉस्ट नहीं होते हैं. हम उन स्टोरीज को एग्जैजरेट करके दूसरों को नहीं सुनाते, रादर सिचुएशन स्पेसिफिक उनकी बात सुनते हैं और उसको रिजॉल्व करने के मोड में चले जाते हैं, उनको काइंडनेस से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. When we have back of one another in every situation, then we will be less in judgment. Action is always a choice of possibility. Reaction is blockage. Reaction to any person, any situation is a repetitive loop of blockages, is a repetitive loop of you operating from only thoughts, feelings and emotions and going down each day. Believe me, when you're operating from thoughts, feelings, emotions, हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं rather than energy flow of light heavy से चलने की बजाय. It is an easy way to intuitively listen to yourself, the universe and your body. But are we choosing? See, I used a but again. Choose, choose, choose from the abundance of the flow. Instead of being lost in the vicious circle of the problems, the vicious circle of the judgments, of the reactions, of the anger, the frustration, the pain, the sadness, let's all rise above all this and choose from the options available of possibilities. Choosing in the rightness and wrongness, choosing in the good or bad of everything is a big, big, big barrier to lots and lots of energy that the universe flows towards us. Yet we do not choose to choose. We just go with the energy of ifs, buts, whys, because, sadness, and we create problems for ourselves. Choosing from abundance or choosing from problems. Choosing to be in the action or choosing to be in the reaction. So an action is always a question and a question is always an action. So what can I do differently today? What can I choose differently today that I have not been choosing previously? What can my actions be different about this situation today that I have never done before? These are the questions that we need to keep asking.
Every time when we are in the question of situations, that is when we are choosing from possibilities. Use these tools and see the expansiveness that they bring in your world. So, a action, remember, is always a question, and a question is always an action. There is no reaction here. For example, इसको एक example से समझते हैं. मेरे बॉस ने मेरे को बहुत रूडली बोला. शायद 20% मेरे काम में फ्लॉ था, 80% बॉस को किसी और वजह से गुस्सा चढ़ा हुआ था. वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे काम में 20% फ्लॉ था, बॉस के हिसाब से शायद 50% मेरा काम गलत था. एंड द बॉस स्टार्टेड येलिंग एट मी. द बॉस स्टार्टेड गिविंग मी अ पीस ऑफ हिज माइंड. एंड I come back from his cabin to my seat frustrated, angry, not in the temperament of doing the work, but with time when the anger settles down, I look back into the work that I had done and I realize that it was more of reaction that I was behaving from. I needed to choose from action. I should have desired to choose from action. Did I ask the question to myself? Even if I didn't, I should ask it now, because the anger has settled down, the pain has melted some, and we can operate from consciousness now. Now, can I choose to ask, क्या ऐसा गलत मैंने किया था जो आज मैं डिफरेंटली कर सकती हूँ उसको चेंज करने के लिए? क्या डिफरेंटली करूंगी जिससे काम में 100% डिलीवरी हो? डोंट वर्क टू सैटिस्फाई योर बॉसेस, वर्क टू enjoy the passion that it is. Work to the expansiveness that it brings around in your world. Ask your body, what can I choose differently to perform today? Body, what difference can I create in my office life today, in my personal life today, in my relationships today, with my money today, with my health today? When we are in all these questions, that is when we are choosing from abundance. We are now not in the judgment of the boss, his behavior, my behavior, the situation at large. We are not into the rightness and wrongness of things. We are not into playing the blame game and bitching about the boss to colleagues, to family, to friends, and so on and so forth. Instead, हम ऑपरेट कर रहे हैं कॉन्शियसनेस से, हम ऑपरेट कर रहे हैं चॉइस से. क्या मैं बेटर क्रिएट कर सकती हूँ आज जो मैंने पहले नहीं किया? क्या मैं बेटर क्रिएट कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, इस मोमेंट में, जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया? यूनिवर्स, शो मी द वे. That's all we need to ask, guys. These are some beautiful and amazing tools that we need to operate from, that we need to expand from, and see the abundance flowing in our lives. Do let me know in the comment section below, how did you feel about it? How did you go with the choosing of it? And like, comment, share, subscribe. See you soon. Bye, guys.